friends, how are you? All well? Good. Chapter number 4. Today's topic is torque on current carrying loop, which is suspended in magnetic field, and this magnetic field must be uniform like this. Here two permanent magnets are set, two permanent magnets N and S pole. Okay, one rectangular coil is placed. This coil is connected with two brushes. The coil is ABCD. Length of the coil is B. Breadth of the coil is suppose A. Now this coil is connected with the battery of EMF epsilon. Now battery is connected. It gives current I. जब बैटरी लूप के साथ कनेक्टेड होगी तो करंट देगी. वो करंट यहां से आएगा, फिर यहां से जाके ये गया, यहां से घूमेगा, ये नीचे आएगा, यहां से मतलब कि यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आके फिर मुझे ये मिलेगा करंट आई. तो पूरा रोटेशन जो होगा वो एक ही करंट का होना चाहिए, करंट आई. ओके, सी magnetic field is from north to the south. Magnetic field is always from north to south, N to S. So magnetic field of two permanent magnet is B. The direction of B is suppose I. Suppose I. Now this is the breadth and length. It is a breadth. Now current passes through the entire coil. Current I passes through coil. Okay, now for BC and AD branch, this is a BC branch, this is an AD branch. For BC and AD branch, current element is I into A. I into A. तो आप ध्यान से देखो, जो करंट एलिमेंट है वो IA है. फॉर BC IA is parallel to the magnetic field. Therefore, angle theta is 0. So F is equals to IAB sin theta. Sin 0 it's 0. Sin 0 it's 0. Now for
AD, it is otherwise they are anti-parallel. Therefore, angle theta, it is 180. So, force F is equals to BI E sine 180, which is 0. Okay. So, the statement is clear. Force on AD and BC is 0. उनके ऊपर कोई फोर्स लगेगा नहीं. तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा? तो फोर्स लगेगा AB and CD. कैसे? Let's see. For AB, current element is IB. Current element it's IB is equals to. ओके, अब इसे किस डायरेक्शन हम लोग यूज करेंगे? तो सिंपल है, ऊपर जा रहा है तो जे डायरेक्शन ले लो. ठीक है, तो इट्स IB J कैरेट, IB J कैरेट. Force F1, it is IB cross B, IBJ cross BI, J cross I minus K, IBB minus K1, minus K for F1. It clear means the force is in downward directions. F1. Okay. Now same for CD. For CD, current is in downward direction, so IB is equals to IB minus JK. It's minus JK. So force F2 is equals to IB cross B. Therefore, F2 is equals to IB J caret cross BI. It is IBB J cross I. J cross I, it's K minus K. And due to this minus, it becomes plus. Simple. So, force here is in upward direction. It is F2. Consider it's F2. F1 and F2 are connected and they are in opposite directions. So we can write F1 and F2 are opposite, equal, but they are not collinear. Therefore, they form couple. They form couple and produce a torque. Produce a torque. First, so fastly go. Okay, पोस्ट को क्लिक करो. बहुत ही इजी वे में हमें इसे समझना है, बहुत डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है. ओके,
अब ये क्या कहता है कि भाई जो फोर्स है वो ये रहा F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है वो है F2, ये सेंटर, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a/2 O. Okay, so torque produced due to each force, so total torque is tau equals to tau1 plus tau2. Torque is what? Force into perpendicular distance. Force it's F1, perpendicular distance it's a/2, ये रहा, ये फोर्स, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सिमिलरली F2 a/2. now a/2 common, F1 plus F2 both are same, IBB. Okay, so 2 times of IBB, a/2 2 times of IBB, cancel, so tau it's IBB and this A into B, length into breadth, area of this loop, so tau is equals to IAB. This is a torque produced in this coil. Okay, let's see something more. Suppose this is a coil. Okay, right now coil कुछ ऐसे अगर हम समझ रहे हैं, ये coil ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. अगर मैं ये मान लूं सपोज ये जो कॉइल है वो इतनी ही घूमती है, बहुत ज्यादा इतनी, सिर्फ तो इतनी, पूरी नहीं घूमेगी, ना 0 पे ना 90 पे, उसके बीच में रहेगी, सपोज मे बी 45, 44, 40, 30, 35 व्हाटएवर. उनको ये लूप पे रहेगी ऐसा कि भाई एग्जैक्टली वो जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं होगा. तो क्या होगा? तो ये जो एरिया था वो भी एंगल बनाएगा. ओके, ये करंट क्लियर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो अभी क्या भाई वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन IA मींस MB, where M is equals to I into A. M is called मैग्नेटिक मोमेंट. जैसे इलेक्ट्रिक मोमेंट था वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट. इट्स यूनिट एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर. इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द एरिया. एरिया की डायरेक्शन में ही वो होगा. अभी सिंपल है कि जो कॉइल मेरी ऐसे थी, ठीक है,
ऐसे, उसका एरिया ऐसे होता है। जब ये कॉइल ऐसे होगी तो ये एरिया जो है वो क्रॉस हो जाएगा, नीचे की ओर बेंड हो जाएगा। तो लाइक दिस, ये एरिया एंड एंगल इज थीटा, एंगल इज थीटा। तो अब की बार जो फोर्स लगने वाला है, ध्यान से सुनना, अब की बार जो फोर्स लगने वाला है वो कुछ अलग होगा। इफ coil is rotated to theta, rotated to theta, therefore angle between B and area, अब एरिया बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, दोनों का तो सेम ही होगा क्योंकि एंगल दोनों का सेम होगा। ये देखो, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एरिया आर सेम इज थीटा। ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो, चलो ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब जो कंडीशन होगी वो कुछ अलग हो जाएगी। ये देखा, ये कंडीशन हुई कि जो एग्जैक्टली फोर्स परपेंडिकुलर थे, लाइक दिस, ऐसे परपेंडिकुलर, वो भी ऐसे हो गए, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली फोर्स जो है वो थोड़ा घूम गए, रोटेट हो चुके हैं फोर्स भी, क्योंकि कॉइल अगर रोटेट होगी तो डेफिनेटली फोर्स भी रोटेट होगा, तो वहां पे भी कुछ एंगल मिलने वाला है। सो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ओके। अभी मेरे पास जो है वो ये डिस्टेंस है, इट्स a/2, दिस इज द डिस्टेंस a/2, और मुझे फाइंड करना है ये डिस्टेंस o a b ले लो, मुझे o a फाइंड करना है, मेरे पास a b दिया है। अब मुझे यहां से कुछ एंगल सेटअप करने हैं। क्या करने हैं? एंगल सेटअप। तो मुझे इस फिगर को अच्छी तरह से ब्रॉड करना पड़ेगा ताकि मैं यहां पे एंगल सेटअप कर सकूं। ठीक है, मैं फिगर दोबारा ड्रॉ करता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। ओके, ये भी ठीक है। इट इज a/2। एरिया जो कि आपकी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये है ये, और जो ये एरिया होगा वो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। एरिया बोल रही है तो m बोलो, द एंगल इज थीटा, एंगल इज थीटा। ओके, अब ध्यान से देखना कि ये जो पोर्शन है ये 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री। तो डेफिनेट है कि ये जो एंगल बनेगा, रिमेनिंग एंगल, वो कितना होगा? डेफिनेटली है 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। कैसे चेक करते हैं? 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस समथिंग x इज इक्वल्स टू 180। 90 प्लस 90 180, 180 कैंसल, थीटा को उस तरफ भेजो, x इज इक्वल्स टू थीटा, x इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये रहा आपका थीटा।
सेम वे ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा AOB। ओके, बड़ी बात नहीं है, इजी है कंसेप्ट। एक बार रिमाइंड करके वापस से देख लो जो भी एंगल मैंने अरेंज किया है वो। Here sin theta, this is an angle. Opposite side OA of one hypotenuse, it's something A dash here. OA dash. Hypotenuse, it's OA dash. Where OA is a OA dash sin theta. OA dash, it's A by 2 sin theta. It is A by 2 sin theta. Okay, लिखो इतना, चलो फटाफट। लिख लिया? तो अब देखो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। लास्ट में जो ये लिखा था कि टॉर्क फोर्स इनटू A by 2, so torque tau is tau 1 plus tau 2 F1, this time A by 2 sin theta, F2 A by 2 sin theta, A by 2 sin theta, F1 plus F2, and we know that F1 plus F2 last time में क्या आया था 2IBB, to cancel IBB sin theta और ये A, length into breadth, length into breadth, area B sin theta, और जब sin थीटा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलती है I A क्रॉस B, I A क्रॉस B, and I into A it's magnetic moment M क्रॉस B। याद करो हमारा टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, P डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था हमारा टॉर्क इन फर्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा वही फॉर्मूला है। सपोज coil has n turns, therefore tau is equals to नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस बी, tau is equals to बीना sin theta, the most important formula, बीना sin theta। now if A is perpendicular to B or M is perpendicular to B, the torque becomes maximum. It is bina sin 90. Sin 90 it's a 1. So torque max is equals to bina tau maximum I and A it's M MB। तो ये है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला और ये हमारी मेन कंसेप्चुअल थ्योरी कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसके अंदर करंट होगा तो ही टॉर्क मिलेगा, तो ही मोशन होगी। क्यों? सपोज इफ करंट इज 0
टाउ इज इक्वल्स टू बीना साइन थीटा, दूसरी तो कोई वैल्यू पता नहीं है मुझे, करंट की वैल्यू मैंने 0 रखी है, इट इज 0, इट इज 0। तो टॉर्क होगा ही नहीं, कुछ घूमेगा ही नहीं। तो याद रखना कि अगर इसे रोटेट करवाना है तो उसके अंदर करंट कंपल्सरी देना है। ये कंसेप्ट का यूज हम लोग गैल्वेनोमीटर के टॉपिक में करेंगे, ठीक है, कि जहां हम एक कॉइल को मैग्नेट के बीच में रखेंगे और करंट देंगे और वहां पे हम उसको रोटेट करवाएंगे। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, लिख लो। Example 11. A 100 tons closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of coil? Okay. Field. Magnetic field at the center of coil is P is equals to mu 0 Ni by 2R. Mu 0 it's 4 pi 10 raised to minus 7. Number of turns 100 10 raised to 2. Current 3.2 ampere by 2. Radius 10 centimeter 10 raised to minus 1 meter. Cancel. 2 to the 4. 2. 3.14. 3.2 10 raised to minus 4. Now it is 2 into 10 raised to minus 3 Tesla. How? The value of 3.14 and 3.2 is nearly around 10. So 10 into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 3. Okay. Second, this is A. What is the magnetic moment of the coil? B. Magnetic moment of the coil is near NIA. Okay. Ni circular pi r square and 10 raised to 2, 3.2, 3.14, 10 raised to minus 1 square, 10 raised to minus 2. This is 10. 10 raised to plus 2, 10 raised to minus 2, cancel. 10 ampere meter square. ओके, आपको लगा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए भी इतनी जरूरत नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन ये लिखा कि the coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla, B is given, 2 Tesla, new value, B is 2 Tesla, in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through the angle 90 degree under the influence of the magnetic field. First, what are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? Now see. Initially, theta equals to 0. Tau is equals to mb sine 0. It is 0. Finally, theta is 90 degree rotating.
equals to mb. This is what? This is 2 mb sine 90. M is 10, B is 2, sine 91. It is 20 Newton into meter. 20 Newton into meter. So, ये रहा आपका C. And last, what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kilogram meter square. थोड़ा बड़ा है तो ये लिख लो, चलो फटाफट ठीक है। Let's go. It's D. Tau is equals to mb sine theta. Okay, but tau is equals to what? Tau is I alpha. mb sine theta. Alpha is acceleration, so velocity divided by time. mb sine theta. I transfer d omega mb by I sine theta dt. d omega mb by I sine theta, it's dt. Now d थीटा से मल्टीप्लाई करो, d थीटा से डिवाइड करो, d थीटा से मल्टीप्लाई करो, d थीटा से डिवाइड करो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का ऑप्शन नहीं है। अगर सिंपल भी हमने यूज किया कि भाई चलो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल वी रिक्वायर द टू लिमिट्स ऑफ टाइम, लेकिन हमें जो लिमिट दी है वो एंगल की दी है, 0 to 90 डिग्री, टाइम की नहीं दी है। तो ये इंटीग्रेशन मुझे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सिंपल है। अगर मुझे एंगल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है तो मैं एंगल से मल्टीप्लाई, एंगल से डिवाइड करूंगा। ऊपर ले लो डी थीटा बाई डी टी, नीचे ले लो डी ओमेगा एम बी बाई आई sin theta d theta. D theta displacement by time, velocity, d omega mb by I sin theta d theta. Take integration this mb by I integration sin theta d theta from 0 to 90. The integration, omega has a power 1, so 1 plus 1, 2 divided by 2, mb by I integration of sine, it's minus cos theta 0 to 90. So multiply 2 here, omega square it's 2mb by I minus cos 90 minus cos 0. Two mb by I cos 90, it's 0 minus plus 1. M is a 10, B is 2 divided by 0.1. It is around 400. Okay. So omega square, it's a 400. Take square root. Square root of 400 is 20 radian per second or only second inverse. So थोड़ा बड़ा है और steps भी है। Biology students खास ध्यान रखो कि tau is equals to I alpha कहाँ से आया? चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 11। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी कहां से आया? चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 11। ओके, डी सामने भेजो,
डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, फिर डी थीटा ऊपर, डी टी नीचे, डी थीटा बाई डी टी इट्स ओमेगा। कहाँ से आया? चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूल पता है आपको, x रेज़ टू n+1 डिवाइड बाय n+1 डाल दिया मैंने। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 0 to 90, टू सामने भेजो, 2mb by I minus cos 90 minus minus plus cos 0, cos 0 it's 1, put the value and get the answer. Okay, चलो next ये लिख लो, पोज करके लिखो। Next it's a 12, the question of the 12 is it's totally theoretical numerical. Current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself, that is turns about the vertical axis? Okay, see, first of all consider A. Torque tau is equals to m cross b. Torque tau is equals to I a cross b. ओके, अब यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होने की कंडीशन क्या है कि टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा व्हेन टॉर्क परपेंडिकुलर टू एरिया, टॉर्क परपेंडिकुलर टू द फील्ड. If torque is in direction either to area or magnetic field, torque is in direction either area or magnetic field B, the value is 0. टॉर्क कैन नॉट प्रोड्यूस. तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए कंपल्सरी परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर टॉर्क की वैल्यू इन दोनों की में किसी एक की भी डायरेक्शन में आ गई तो समझ लो कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच ए मैनर दैट अराउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका एरिया इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिया है और बोल रहे हैं कि टॉर्क भी ऐसे फाइंड करो. ये टॉर्क फाइंड नहीं हो सकता. टॉर्क कैसे फाइंड होगा? ये अगर ये तीसरा ये बनना चाहिए, टॉर्क फील्ड एरिया, टॉर्क फील्ड एरिया, टॉर्क फील्ड एरिया, ऐसा कुछ भी बनना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए. अगर डायरेक्शन में आ गया तो पॉसिबल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, a current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is the orientation of the state equilibrium? Shows that in this orientation the flux of the total field external plus field produced by the loop is maximum. Okay. Orientation of the field. तो suppose ये field जा रहा है, ये B. ठीक है, अगर कोई कॉइल ऐसे बनेगी और उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा, इट्स बी इंटरनल, सपोज ये बी एक्सटर्नल, उसका एरिया भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. ओके, इफ बी एंड ए are in same direction, therefore theta is 0. In this condition phi becomes maximum. Phi becomes maximum. और जो phi maximum होगा वो कितना होगा? B है जितना. तो B is what? Total magnetic field, external and internal, sum of the external plus internal.
इंटू ए, और ये मैक्सिमम आपको फ्लक्स मिलेगा कब, जब ये एग्जैक्टली लूप फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब। नेक्स्ट, a loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field. If a wire is flexible, why does it change to a circular shape? Okay, circular shape में change क्यों हो जाएगा? The only one reason, because circular shape, सर्कुलर जो शेप होता है कवर्स मैक्सिमम एरिया, वो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, एंड देयरफॉर फ्लक्स एंड टॉर्क बिकम मैक्सिमम। अब टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, टॉर्क इज वन काइंड ऑफ अ फोर्स, तो टॉर्क क्या करेगा, उस फ्लेक्सिबल वायर को बड़ा करेगा, ओके, बड़ा करेगा और सर्कुलर शेप में लाने की कोशिश करेगा। क्लियर? देखो एक्सरसाइज नंबर 9, square coil of side 10 centimeter consists 20 turns and carries consist 20 turns means N, carries a current of 12 ampere, it's I. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil, angle 30 degree with the direction of magnetic field. Horizontal magnetic field of magnitude 0.8. What is the magnitude of torque experienced by the coil? So let's find out torque. Torque is experienced by coil is tau बीना sin theta, tau square coil area L square sin 30, B 0.8 Tesla, current 12 ampere, turns 20, side of length 10 centimeter 10 raised to minus 1, sin 30 it's 1 by 2, it is 10, 12 into 8 9.6, 10 raised to minus 1, it's 0.96 Tesla, sorry, Newton into meter torque is produced, 0.96 Newton into meter torque is produced. Okay, write down.